Namaste students, I welcome you all in Anupama classes through YouTube channel. Students, today we will read another objective of 5-year plan from the second chapter, 5-year plans in India, goals and achievement. And the objective is modernization. Actually, what do you mean by modernization and why the modernization is done? Our planners always recognized the need for the modernization of society to improve or for improving living standard of people. अगर हम बात करते हैं मॉडर्नाइजेशन की, व्हाई मॉडर्नाइजेशन इज डन, दिस इज जस्ट डन टू इम्प्रूव द स्टैंडर्ड लिविंग और द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, राइट? Modernization includes two things. One is adoption of new technology. What is this adoption of new technology? It means increasing the production of goods and services by using or by adapting new technology. Got it, students? So adoption of new technology का मतलब क्या होता है? It means increasing the production of goods and services. How that can be increased? The goods and services can be increased by using new technology in it. Example, suppose a farmer uses a new variety seed instead of the old one. Of course, it can increase his production. Suppose a factory uses a new technology machine. It can increase its production, right? It can also increase its production. This is adoption of new technology. Modernization includes two things. One is adoption of new technology and the other one is change in social outlook. What is this change in social outlook? See, modernization requires change in social outlook. If women are given equal rights like men, or they are given the chance to show their talent at workplace, of course, the society can be prosperous and also civilized to live, right? The gender biased whatever is there, that has to be reduced. And now students, when I talk about the modernization and new technology, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम मॉडर्नाइजेशन की बात करते हैं और टेक्नोलॉजी की बात करते हैं तो इसका मतलब अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ऐसा है? मींस मॉडर्नाइजेशन न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते ही लोग अनएम्प्लॉयड हो जाएंगे या लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट हो जाएगा? नेक्स्ट, इट इज नॉट द सेम. Modernization and employment generation goes together. How? I'll explain you. See, by adopting a new technology, हम मान के चलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी के कारण प्रोडक्शन ज्यादा हो गया, बट लेसर this implies lesser labor कम हो गए, मीन्स लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट. ऐसा कह रहे हो? लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं होता ऐसा, क्योंकि न्यू टेक्नोलॉजी अडॉप्ट की है, प्रोडक्शन ज्यादा हो गया. अगर प्रोडक्शन ज्यादा हो गया तो प्रोडक्शन एक्टिविटी भी ज्यादा हो जाएंगी एंड इनकम ऑफ द पीपल विल आल्सो इंक्रीज.
People of income will increase. When the people of income increases, they'll demand for more goods and services. Goods and services. Demand for more goods and services means what? Producers have to plan for more output, क्योंकि डिमांड ज्यादा हो गई है. अब ज्यादा आउटपुट को प्लान करने के लिए क्या होगा? दे रिक्वायर इनपुट. उनको ज्यादा इनपुट चाहिए होगा. इनपुट मीन्स व्हाट? ऑफ कोर्स लेबर. एंड लेबर इज नथिंग बट जनरेटिंग इनकम. सो हम कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन एंड जनरेटिंग इनकम गोज टुगेदर. तो आज के लिए इतना ही. दिस वॉज द ऑब्जेक्टिव ऑफ आवर 5-year प्लान. हम जो काम करें वो टेक्नोलॉजी तो इन्वॉल्व करें, टेक्नोलॉजी को तो हम इन्वॉल्व करें, पर टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं होगा कि हम लोग अनएम्प्लॉयड हो गए हैं या there's a lack of employment. ठीक है. It was mainly to increase the living standard of the people. So students, if you like my video, please like it, share it, comment and subscribe it. Thank you students.